Awesome, everyone. Thank you so much for joining in. I would request everybody to please switch on your cameras. And I'm just starting off with the webinar for the day. Type BOI in the chat box, that is, bring it on if you're really excited for today's webinar. I would request everybody type BOI in the chat box. If BIO, sorry, bring it on. It's BIO, right? Sorry. Type BIO in the chat box that if you are very excited to learn that how you can scale to 5 lakh rupees within the next 6 months, and you can definitely change yourself. So this is going to be an entire proper roadmap that I'm going to tell you that how you can scale yourself within like 6 months, and you can, and within like 1 month, that how you can scale up to 1 lakh rupees. I'm going to share you that strategy as well, that how you can earn your first lakh within the very first month after this webinar, starting from August itself. How you can earn your first lakh rupee using the power of social media and using your skill. Excited, everyone? Type I in the chat box if you want me to start today's session. Awesome. Great. Okay. So, can all of you, can you all see my screen? Can you see my screen, everyone? Wait, it is. Right. It got paused. Yeah, I know. Awesome. Can you all see my screen now? Is it visible, everyone? Okay. And I would request everybody, I would request all of you to please use the chat box only for communication. Please don't unmute yourself. Alright. So in order to maintain the decency, I request all of you to please use the chat box to write anything and to ask anything. Alright. Not to unmute yourself and then talk. Alright. So let's start today's webinar. So I welcome you all to our masterclass for the day. Today is 30th of July. It's a live masterclass that is on niche clarity. So why have you, first of all, my question is that why you all have joined our webinar today? Why you all have joined our webinar today? It can be any reason. Type your reason in the chat box right now, that why have you joined our webinar today? What is your reason to join our webinar today? What is it? Why you wanted to join our webinar for the day? You could have gone for a cup of coffee, you could have gone for like cricket, you could have gone for a movie, it's weekend, it's Saturday, but still you are here investing your time trying to learn something new. What is your reason? That why have you come over here to learn about niche clarity or to experience this live masterclass? What is your, it has been ages that I am unable to find my niche. What is your age? Sumit, what's the age? Feel so confused about my niche. To get a blueprint on niche clarity, 23. So it means that you must have started working, within, from last what? 4-5 months? 4-5 years, sorry. It has not been years. Years का मतलब होता है 10-15 साल. So yeah, you are on a journey. Okay. Want to grow my digital marketing business. Alright. What about others? I'm so confused about my niche. You already have a niche, Manisha. You already have a niche, Manisha, that is digital marketing, MLM. So, alright, so all of you have a reason. Is it not that everybody is here to earn more money? Is it not that each and everybody of you here is here so that you can earn more money? Type Y in the chat box if you all agree. The ultimate aim to learn about copywriting, to learn about graphic designing, to learn about niche clarity, to talk about business, to talk about freelancing, anything, to do a job or to become a government employee or to do anything. The end goal is to earn money. Okay, Sumi, got it. Your end goal is to earn money. Yes, everyone, type Y in the chat box if you all agree to this. Yes, your end goal is to earn money. But the thing is, everybody tells you, absolutely, everybody in the market tells you that they will help you to earn money. आप ऐसे कर लो तो आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन कोई बैठ के ये नहीं सिखाता कि हमें करना कैसे है. Yes or no? You will go to coaches, they will tell you, you do this, do that, do this, do that, but they will not tell you how to do that. Yes or no, everyone? How many of you all agree? Everybody will tell you that what to do, but they will not tell you how to do. Isn't it? Yes. Type Y in the chat box if you all agree. Type Y in the chat box if you all agree. Right.
So I am over here to help you out that how you can start your business from the very scratch and you can scale it to 5 lakh rupees within the next 6 months. There is a sure guarantee that if you follow everything that I tell you here today, nobody can stop you then. Nobody can stop you then. Makes sense, everyone? Type E if you are excited. I will just move to the next slide. Awesome. So I will just tell you something about myself. I want to ask one thing. From where you all got to know about me? Either like how do you got to know about me, everyone? From where you got to know about me? Kindly type in the chat box, please. From where you got to know about me? Through Instagram, okay? Rahul Bhatnagar sir, okay? Instagram. Alright. What about others? What about others? How you got to know about me? Okay, awesome. So this is something that I want to tell all of you about me. So I'm a Josh Talk speaker. Prior to that, and I am a business scalability coach. Basically, if I talk about business, I help coaching business and consulting business to scale and how they can start off. I'm a soft skills trainer as well. I'm a certified trainer. I have trained 30,000 plus mentees. I I have delivered physical sessions at 50 plus organization. I have been featured with Dainik Jagran Punjab Kesari multiple amount of times. I have successfully completed 300 plus live webinars within the past 365 days. I have been an assistant professor at the age of 22. I have been heard on Radio Maharani and Radio Manavrachna also. I have earned 2.5 million using Instagram organically. What is million people? Can anybody help me to understand that? What is million over here? If I convert 2.5 million into INR, what is the exact amount that I'm talking about here? Exactly, yes. This is something that I have earned after having a failed startup. I had a failed startup in 2020, and from there I started everything from the very scratch, and whatever I am in front of you, and and why am I doing what I am doing these days? It's because I have felt that most of the people don't have the knowledge that how they can grow. Type Y. So the problem nowadays is the problem is not education. The problem is not knowledge. You can go to YouTube. If you find out that how you can earn more and more money in your business, you will find a number of videos. Yes or no? You will find a lot of videos talking about that how you can earn more money, how you can grow in your MLM, how you can scale through this, how you can get more clients. There are a lot of people, and if you do so for 24 hours, the ultimate thing that you will get is you will get confused because you will have so much of knowledge inside of you. Yes or no? अच्छा ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, so you will get confused. So right now everybody of us is looking for that one person जो हमें ये बता दे कि हाँ ये करना है और ऐसे करना है, and this is how I can achieve success. Yes or no, everyone? I believe this is something that we are looking forward to. Yes or no? This is something that we all are looking forward to, that somebody can tell us कि ये करना है ऐसे करना है, and this is something that you do and then you can earn more and more money. As simple as that. So I'm over here exactly roadmap, and that is a tried and tested roadmap. That is not something कि किसने अपनी ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं और वो तुम्हें सिखाने आ गया है. But the thing is they have applied it in their life and they're teaching you that how you can do that, right? So this is something that I have been doing. And next thing, I firmly believe that each and everybody of us has a potential so that we can earn more and more money into our life. How many of you think money is a problem? Earning money is difficult. Type I. How many of you think earning money is difficult? Type I in the chat box. Okay. Type I in the chat box if you feel that earning money is difficult. Alright. Yash Agarwal says yeah. Sachin says I. Everybody of you feel like earning money is difficult, but I would like to say is earning money is not difficult. Not having the right guidance and finding that one person who can help you to achieve, who can help you actually to earn money out of your entrepreneurship journey is difficult. Earning money is not difficult. अभी जब हम यहाँ बैठे हैं, there must be somewhere in this entire world who must be earning 1 lakh rupees right now. Yes or no? जिससे शायद 2 लाख रुपए इसी मोमेंट कमाए होंगे, जिससे शायद 3 लाख रुपए इसी मोमेंट कमाए होंगे.
Every single minute, more than 60,000 UPI payments happen in India. Do you know this? Either if it is for 1 rupee. 60,000 payments happen in India every single minute. How many of you know about this? 60,000 UPI payments happens every single minute. So can you imagine the amount of money you can actually earn every single minute? But the problem is you are not able to earn that money because you don't have that ecosystem wherein you can earn a lot of money. Type yes in the chat box if you agree that somewhere in the planet, somewhere is earning. Right? Sachin, kindly attend this webinar right now. Alright? I would request you to please attend this webinar. This is important. उसके बाद क्या होगा वो I will sort or my team will sort. First of all, attend and take the knowledge. That is very, very important. Alright? So this is something that's very important, people, that you make this thing very, very sure that earning money is not important. Finding that one person who can literally help you out in building that particular brand of yourself and in helping you building that ecosystem is difficult. Understood? So if I proceed further, it's a humble request that I have for all of you. Please stay till the end. Queries will be answered at the end. And जब तक आपके मन में कोई query आएगी, I'm 100% sure, जैसे जैसे आप webinar आगे देखते जाएंगे, आपकी query वो automatically solve होती जाएगी. Close all your tabs and focus on the learning. Very, very, very important, because I feel you need to give dedicated attention, because this is something that can take you from 0 to 5 lakhs within 6 months. Excited everyone? Should I proceed further? You want me to proceed further, everyone? Type I in the chat box. Right. Awesome, awesome. Everybody please switch on your camera so that I can see you. Everybody please switch on your cameras. I would be very happy to see all of you. Okay. Thanks. And have a notebook and a pen ready with you people. Very, very, very important, because learning, when it's written, goes inside your mind and it should be there. No worries, no worries. Alright, so first of all, let's understand what is a niche. First of all, I would like, मैंने तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि क्या होता है niche, a specific area in which you have more knowledge or experience. But I would like to ask you that according to you, what is the niche? According to you, what is niche? This is something that I want to ask everybody. आपके नज़रिए से niche का मतलब क्या होता है? Write it down in the chat box, please. What do you understand by the word niche? Very, very, very important, people. Specialized area. We have interest in particular thing or work. Alright. What else? What else do you think about niche, people? क्या हो है ये? Work we like to do. General or hard. Very good example, Abhinav. Very good example. Okay. Very good. What about others? What do you think, people? What is actually a niche? मैंने यहाँ पे I've written a very professional definition of a niche, that a specific area in which you feel you have more knowledge or experience. अच्छा, how many of you think कि, for example, if you start your MLM business today, if you start your affiliate marketing business today, if you start your freelancing today, if you start any entrepreneurship journey today, how many of you feel and how many of you think that you should start earning 1 lakh or 2 lakh or 3 lakh rupees within the first month itself? How many of you have that feeling कि यार entrepreneur बनना है तो पहले महीने से मुझे result चाहिए? How many of you think like that? Type I. Type I in the chat box. That if you're starting something, you expect the returns within the first month itself. I don't think, okay. What about others? What about others? अरे कुछ तो लिखो. How many of you think like that? I also think so, ma'am. Okay. What about others? 50-50. Okay. Ehsan, what about you? Alright. So first of all, it's very important to understand, people. Right now, at this moment, I want you to write down in your diaries, what is that one thing you feel you have experience or you have knowledge about? Type that one thing. Write that one thing in your diary right now. Or type that into chat box itself.
ऐसी क्या एक चीज़ लगती है आपको जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर आपकी नॉलेज है, या फिर आपका इंटरेस्ट है? एंड हाउ मेनी ऑफ यू चूज योर प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ समबडी एल्सेस सक्सेस, कि यार वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो वो पैसे कमा रहा है तो मेरे को भी डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? आपने अफिलिएट मार्केटिंग इसलिए की क्योंकि कोई और पैसा कमा रहा है, दैट वॉज नॉट योर कॉलिंग, that was not something that you really wanted to do, but you saw somebody else doing that, so you thought I will also do it. कभी किसी के साथ हुआ है ऐसा कुछ? Public speaking, Hassan says public speaking, okay. What else do you think, people? What do you think is your area in which you think like you have more knowledge or you have more experience? What do you think, people? ऐसी क्या वो चीज़ है? Write it down in the chat box. What do you think about it? Okay. Happens with a lot of people, right? That we choose our profession on the basis of somebody else's success. Graphic designing interest है आपका, okay. But my question to all of you is, if somebody else is successful, कोई और किसी profession में पैसे कमा रहा है, we are only seeing that 5 or 10 lakh rupees, but we don't see the struggle, the failure that happens at the back end. Yes or no? No worries, Sumit. Will help for this today. Don't worry. We don't look at, so today, like most of the people, when I go somewhere, वैसे, and one more thing, people, very very important. Whenever you want to start your entrepreneurship journey, it's very important to start forgetting your accomplishments also. Otherwise, आपके अंदर ego आने लग जाता है. So yesterday also I edited one of my story. So what happened? When I went for the Josh Talk, अब मैं कहीं पे जाती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं, अरे मैम, you have done Josh Talk, I want to become like you. But nobody has seen the 6 years of struggle, the failed startup struggle, the 10 lakh rupees that I lost. Nobody sees that. Now what they see is Josh Talk, the money, the fame, the respect that I get in the society. They see that. So it's very very important to understand one thing, people, that you need to choose your niche on the basis of your understanding of different things. So in order to give you more understanding of it, how to, your niche breeds riches. Very 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 important thing to understand, people. Very 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 important thing to understand. Your niche breeds riches. If you don't have a niche, अगर आप आज ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, कल आप वीडियो एडिटिंग करोगे, उसके बाद आप कुछ करोगे, आप कभी भी रिच नहीं बन सकते. आपको एक चीज़ पकड़नी है, उसी में ही माहिर होते जाना है. समझ आ रहा है आप लोगों को? एंड नाउ you have to understand one thing, people. How many of you want to become freelancers, like video editors, copywriters, graphic designers? How many of you want to become that? Type I in chat box, like digital marketer, Facebook ads, ये सब जो करते हैं. Okay. Now my question to you is, आपको इस चीज़ के बारे में कुछ तो knowledge है? You have 1% knowledge of this industry जो हाँ लिख रहे हैं. Do you have at least 1% knowledge of this industry? Yes or no? Yes. Now think about that there are so many people who don't have even 1% knowledge of this industry, but they want to do something in this industry. Yes or no? Yes. So now comes a very important point that most of us forget when it comes to earning more money. That is education. That is what? Education. Educating people. I am not saying that आपको graphic designing छोड़ देनी है. I am not saying कि आपको कॉपी राइटिंग छोड़ देनी है. नहीं, आप जब तक आप कॉपी राइटिंग, जब तक आप ग्राफिक डिजाइनिंग क्लाइंट के लिए कर रहे हो, यू आर डिपेंडेंट ऑन मनी फॉर यू आर डिपेंडेंट फॉर मनी ऑन योर क्लाइंट. येस और नो? क्लाइंट आएगा तो हमको पैसे मिलेंगे. येस और नो? बट व्हेन यू हैव योर एंटायर कोचिंग बिजनेस सेटअप, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप कुछ सिखा रहे हो, आपको जो आता है वही सिखा रहे हो, बिकॉज और लोगों को वो चीज़ नहीं आती है. So it means that you're creating an ecosystem that works according to your effort. Yes or no? The money is not dependent upon some client or something. It depends upon how much work you are adding, how much work you are doing, provided you follow the correct steps. Yes or no? So agree? Right. So there comes the importance of education sector. E-learning is going to be a $25 billion industry by 2025. आइदर आप या तो ई लर्निंग में खरीदोगे या आप ई लर्निंग बेचोगे. हु इज गोइंग टू अर्न मनी?
if you are being a part of e-learning? Definitely. Who is providing knowledge? Yes or no? अगर उस $25 बिलियन का अगर मेरे को 0.01% में मिल जाए, मेरी जिंदगी सुधर जाएगी? Yes or no? एंड उसके साथ साथ आई एम इम्प्रूविंग सो मेनी लाइव्स, राइट एवरीवन? उसके साथ साथ आई एम इम्प्रूविंग सो मेनी लाइव्स, आई एम एडिंग वैल्यू टू सो मेनी लाइव्स, एंड दैट इज हाउ योर निश ब्रीड्स riches. Understood everyone? Understood? Type I in the chat box if this is clear to all of you. Type I in the chat box if this is clear. Okay. Good. I hope all of you are able to understand. And now you must think that यार मैं क्या सिखाऊं लोगों को अगर मैं affiliate marketing करती हूँ या फिर मैं digital marketing करती हूँ. अगर आप affiliate marketing कर रहे हैं तो आपको sales आता है. अगर आपने एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया affiliate marketing में, आपको सेल्स आता है. बहुत सारे बच्चे जिनको सेल्स नहीं आती. यू कैन टीच पीपल सेल्स. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आप सोचेंगे यार मैं क्या बेचूँ. आपको नेटवर्क मार्केटिंग आती है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉस्पेक्ट को मीटिंग में बुलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है. देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज दैट अ पर्सन फेसेस व्हेन दे बिकम अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपका अपलाइन आपको चीज़ें तो दे देता है, आपको सिखा तो देगा, प्रोडक्ट नॉलेज दे देगा, बट ही विल नॉट टेल यू द करेक्ट स्टेप दैट यू नीड टू फॉलो टू स्केल अप. येस और नो एवरीवन? येस और नो? सो हेयरिंग यू कैन बिकम दैट कोच सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ. दे कैन गिव द जो चीज़ें आपने फेस करी है वो और लोग फेस ना करें. राइट एवरीवन? समझ आया? ओके. नाउ बट द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड योर निश. किस किस का क्वेश्चन था ये अभी तक? किस किस का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि यार सब कुछ ठीक है बट मेरे को मेरा निश फाइंड आउट कैसे करूँ मैं? माइंड, राइट? व्हाट अबाउट अदर्स? हाउ मेनी ऑफ यू आल्सो स्ट्रगल टू फाइंड योर निश? हाउ टू फाइंड योर निश? बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है मार्केट का कि यार मैं अपना निश फाइंड कैसे करूँ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आंसर 4 क्वेश्चन. एक तो चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग आपको बोलते रहते हैं कि थिंक अबाउट योर व्हाट, आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है. बट उसके साथ साथ हमें इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है. फर्स्ट इज, इससे भी पहले क्वेश्चन को मैं आपको पूछना चाहूँगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए बचपन से आपको अप्रिशिएट किया जाता है? आइदर इट कैन बी स्पीकिंग, राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स, साइंस, or it can be your management skills, or it can be your debating skills, or it can be your creativity skills. ऐसी कौन सी स्किल है जिससे बचपन से आपको बहुत ज़्यादा सराहा गया है? ऐसे कुछ है तो लिखो एक बार चैट बॉक्स में. थिंक अबाउट इट, दैट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट पीपल हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड इन यू. व्हाट इज दैट वन स्किल? राइट इट इन द चैट बॉक्स पीपल. Write down in the chat box that what do you think it is that one skill that you have got most compliments about from your childhood till now. And management skill, okay. Good. There are a lot of people who don't have management skills, isn't it? Next question that I want to ask you is, what is that one thing? What is that one thing that you internally feel कि यार मुझे कभी ना कभी ज़िंदगी में शायद ये करना है? It can be dancing, singing, writing, anything, like any damn thing. What is that one thing that you feel कि यार ये मेरे दिल से आता है, जब मैं इस चीज़ को करती हूँ ना तो वो वक्त ठहर जाता है. जनरल अप्रिसिएशन, नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग पर्टिकुलर. सुमित, कुछ ना कुछ तो होगा. योर निश विल नेवर कम टू यू, हैव टू गो टू योर निश. एब्सोल्युटली. मतलब आपका निश आप तक आएगा, लेकिन उसको पहचानने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना. नथिंग. ओके. सो अगर इन सब के आंसर्स भी तब भी नहीं मिलते, सो दीज आर दिस 4 क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर. फर्स्ट इज व्हाट यू लव. सेकंड इज व्हाट यू लाइक. थर्ड इज द सेम सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. एंड फोर्थ इज कैन यू बी पेड फॉर इट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लाइक? कौन बताएगा? What is the difference between love and like? Who will tell the difference between love and like? So love and like is just like relationships. Relationships that happen these days. So likeness
It's just like I don't care if you don't talk to me after this. I will not care if you don't talk to me like this. And what is love? That you are deeply concerned about that. Yes, अगर ये बंदा मुझसे बात नहीं करेगा तो this is something you know I will not feel happy about. This is something that I will feel missing. So now first of all you have to make your like list कि यार I like dancing, I like singing, I like writing, I like cooking, I like baking, I like Excel, I like PPT designing, I like copywriting, I like writing mails, I like, for example, fashion designing, I like makeup, I like nail extension designing, I like this, I like that, calligraphy, anything, like any damn thing what you like. Type I in the chat box if this is clear first. Type I in the chat box if this is the first step जो आपको थोड़ा बहुत clear हुआ है. पहले आपको likeness की list बनानी है. You have to make a likeness list. Second thing that you have to do is you have to make a love list. जो आप likeness list बनाओगे उसी में से now just sit with yourself and think deep. कि for example आपने लिखा है likeness में लिखा है you have written dancing. और डांसिंग में भी कैसा वाला डांस, फॉर एग्जाम्पल कथक डांसिंग. आपको कथक डांसिंग बहुत अमेजिंग आता है, ठीक है. अब आपने क्या किया, अब आप उसमें से अब आप ये सोचोगे अगर मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, कथक डांसिंग टीचर हु इज गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग ऑनलाइन XYZ. हम कैसे भी एक ऑनलाइन टीचिंग मॉड्यूल इसका डिज़ाइन करते हैं. अगर इस इंडस्ट्री में मुझे 10 लाख का लॉस हो जाता है आज ही आज, क्या ये कथक डिजाइनिंग इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री जिसको मैं कल सुबह उठ के फिर से वही करना चाहूँगी? आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स लड़ाई करते हैं, कभी कभी मे बी आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो जाती है. एक बारी तो ये होता है कि यार चलो अगले दिन बात ही नहीं करनी, अब से कभी बात ही नहीं करेंगे, बट स्टिल व्हाट इज लव, दे सॉर्ट इट आउट एंड उसी होप के साथ वो फिर से अगले दिन बिगिन करते हैं. यस, समझ आ रहा है? तो देन यू हैव टू मेक अ लव लिस्ट. Understood everyone? Type Y in the chat box if you all agree. Type Y in the chat box if you all agree, people. Why? Right. Next you have to ask one thing. क्या इस चीज़ की जो मेरी लव लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 बनाई थी लाइक में, अब उसमें से 4 आ गई. अब नाउ यू हैव टू थिंक इन चार में से किस चीज़ की डिमांड है मार्केट में. अब एक और चीज़ आती है, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि यार अगर मैं इस इंडस्ट्री में कुछ करूँगा तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दैट? इफ़ आई डू समथिंग इन टू दिस इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी यार कोच बन गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, अगर मैं भी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बन गया, अगर मैं भी पब्लिक स्पीकर बन गया, अगर मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कोच बन गई, अगर मैं भी सेल्स कोच बन गई, तो यार मेरे लिए तो जगह ही नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं. हाउ मेनी इफ यू थिंक लाइक दैट? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स इफ यू अग्री. टाइप वाई इफ यू थिंक लाइक कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है आपकी इंडस्ट्री में. सो आई वुड लाइक टू टेल यू, कॉम्पिटिशन इज़ अ पॉजिटिव साइन. कॉम्पिटिशन इज़ अ पॉजिटिव साइन कि इस चीज़ की डिमांड है मार्केट में, क्योंकि इसी चीज़ की डिमांड की वजह से कोई और पैसे कमा रहा है. येस और नो? इफ देयर इज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट इट मीन्स देयर इज डिमांड फॉर दैट वन थिंग, राइट? अगर किस चीज़ का कंपटीशन नहीं है इट मीन्स उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, तो उस चीज़ में जाने का फ़ायदा ही नहीं है ना. In order to find out the demand for a particular thing, you will go to Google Keyword Analytics. Google Keyword Analytics पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपना कीवर्ड डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल कथक डांसर, आपको पता चल जाएगा कितने लोग इसके बारे में सर्च करते हैं रोज़. समझ आया आप लोगों को? फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ इस चीज़ की डिमांड है मार्केट में और ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा है. लोगों को कथक सीखना है, मुझे जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कथक, बट मेरे को कोई टीचर नहीं मिलता है, ठीक है ना. सो फर्स्ट थिंग इज दिस सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. एंड सेकेंड थिंग, अगर 4 में से आपको 2 ऐसे लग रहे हैं, 2 ऐसे है कि यार आई एम गुड एट कुकिंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम गुड एट ईटिंग. सो आपको ईटिंग में क्या अच्छा लगता है? मैगी. सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, हाँ भूख मिटती है मैगी खाने से और उनके पैसे बढ़ रहे हैं. कैन यू बी पेड फॉर इट? एब्सोल्युटली नॉट. मैगी खाने के कोई आपको पैसे नहीं देगा. दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल जो मेरे मन में आया, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपको किसी इंडस्ट्री में पे नहीं किया जाता, यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल मिनट इन टू दैट, बिकॉज एट द एंड हर किसी का एम क्या है? पैसे कमाना. समझ आया आप लोगों को? अंडरस्टूड? टाइप ए इन द चैट बॉक्स इफ यू ऑल आर क्लियर विद ऑल ऑफ दीज 4 पॉइंट्स.
Type A in the chat box if you agree into all of these 4 points. थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई आपको? थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई? Type Y in the chat box if you got some clarity. Alright? Awesome. Next way to find out your niche is to write the story of your life. Write down the story of your life. बचपन से लेके अभी तक किस चीज़ के बारे में आपको सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट मिले, कौन से कंपटीशन में आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला, क्या थर्ड प्राइज़ मिला, किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, किस चीज़ के लिए लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, किस चीज़ के प्रॉब्लम लेके लोग आपके पास आते हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए. ऐसा भी होता है ना, बेसिकली यू आर एन एक्सपर्ट इनटू समथिंग. फॉर एग्जांपल यार आपको कोई कॉल करता है गाड़ियों के बारे में, इसको गाड़ियों के बारे में सबसे ज़्यादा पता होगा. यस और नो? अगर फॉर एग्जांपल लोगों के दिमाग में अरे यार मोबाइल के बारे में पूछना है ना तो इससे पूछना है. Yes or no? So, write the story of your life, and in the story of your life you will find कि this is something that I have been doing repetitively और इसमें मेरा interest भी है और ये मेरे से बहुत naturally निकलता है. Understood everyone? Understood? I believe this is clear. Right? So it is a 3-way process. You have to first understand, आपको लिखना है properly, then you have to read it again. एंड एक और चीज़ जो आप कर सकते हो, कंडक्ट अ सर्वे विद योर फ्रेंड्स. मेक अ गूगल फॉर्म. गूगल फॉर्म सबको बनाना आता है, येस और नो? कभी कभी ऐसा होता है हमारी क्वालिटी हमें नहीं दिखती और हमारे पेरेंट्स को और हमारे आसपास वाले लोगों को दिख जाती है, येस और नो? होता है ना कभी कभी ऐसा. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल मेक अ गूगल फॉर्म. यू विल सर्कुलेट दैट गूगल फॉर्म विद योर फ्रेंड्स, with your parents, with your relatives, and you will simply ask that, what do you think I am good at? What do you think I am good at? And why do you think I am good at? From there you will also get a clarity कि यार लोगों को क्या लगता है और क्या मुझे भी वही लगता है. कभी कभी ऐसा होता है आप अपने आप को नहीं देख पाते, कभी शीशा आपको बताता है कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ. Yes or no? You sometimes you need a mirror. So this Google form will be a mirror. उसमें कुछ ऐसा आया जो 3-4 बार रिपीट हो और आपको नहीं पता, तो ये उसके बारे में आप सोचोगे ना थोड़ा, अरे ये 4-5 लोगों ने लिखा, ये मेरे अंदर कब से आया, मैंने तो कभी इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया. समझ आया people? Type P in the chat box if you all are clear onto this. Type P in the chat box. P for pencil. Okay. All of you are learning something? Type V in the chat box if you all are learning something. Type V in the chat box if you are learning something. Great. Awesome. Next thing is, money is the easiest thing to earn these days. To earn money you just need आपको 3 चीज़ें चाहिए. आपको अभी बताती हूँ करण, मैं 1 मिनट रुको. First step is you have to write the story of your life. Second thing, you have to read it again, and third is you will create a Google form, you will circulate, and then you will start understanding, you will start connecting the dots. Money is the most easiest thing to earn these. There are only 3 things that you need to earn money. First is a skill. आपके पास कोई skill होनी चाहिए. You need a skill. Second is आपके teachable skills होनी चाहिए. That is आपके पास communication skills होनी चाहिए. आपके पास soft skills अच्छी होनी चाहिए. And third is you need a phone, you need a laptop, and you need internet. That is it. That you need to earn money these days. How many of you agree with this? Type A in the chat box. How many of you feel like that I want to have freedom in my life? मैं कहीं से भी काम कर रहा हूँ, कभी मैं हर संडे घूमने जा रहा हूँ, हर हफ्ते मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, and from there I am working. How many of you have a dream like that, that you are working from anywhere across the world and still money is flowing? अब मैं आपको बताती हूँ 4-5 दिन पहले की बात. I was sitting with my family and ultimately I saw 6 enrollments happened. I was sitting with my family and there was money that was coming into our bank account. It is because that we are helping people somewhere and they also connect with us, right? So it is very important that you create a drive for yourself. You start working on yourself from today so that you can reach that target of 5 lakh rupees in 6 months. Understood everyone? Got it? Type A in the chat box if you all agree. Cool. So next is 1.33% people are future leaders. How many of you agree with this? And what do you mean by this?
1.33% people are future leaders. What do you, क्या मतलब क्या है इस लाइन का? कोई बताएगा what is the meaning of this line? Like, what do you think is the meaning of this line? 1.33% people are future leaders. What do you think? क्या है इसका मतलब? What do you think is the meaning of this sentence, people? It simply means only 1.33 people are actually optimizing the power of social media. No. They are using the power of social media. अब एक बात बताओ, मैं अपना एक कोचिंग सेंटर खोल के बैठ जाऊँ, उस कोचिंग सेंटर में सिर्फ मेरी सिटी के नहीं, सिर्फ मेरी लोकेलिटी के ही लोग आएंगे, yes or no? बट अगर आई एम ऑप्टिमाइजिंग फ्रॉम राइट नाउ, आप कहाँ से मेरा वेबिनार देख रहे हो? फ्रॉम वेयर आर यू वॉचिंग माई वेबिनार राइट नाउ? पीपल राइट डाउन द सिटी यू आर वॉचिंग दिस वेबिनार फ्रॉम. अमृतसर, दिल्ली, बरेली, दिल्ली, सिलीगुड़ी, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, अम्बाला. Okay. What about others? What about others? So it simply means that when it simply means that when you use the power of social media, you fall in front of people you even don't know. Yes or no? Yes or no, everyone? So it's very, very, very important to understand this thing, people. कि आपको उस future leader बनना है who is using the power of social media. Simple as that. समझ आया? Type R in the chat box if you all agree and if you really wish to become a future leader. Great. Awesome. Next is why you. Why would somebody come to you? For example, if you are saying that I am a soft skills trainer, so दुनिया में तो बथेरे soft skills trainer है, तो मैं सिर्फ आपके पास ही क्यों जाऊँ? आपसे ही मैं क्यों ग्राफिक डिजाइनिंग सीखूँ, या आपसे ही मैं क्यों डिजिटल मार्केटिंग सीखूँ? Why you? Why only Apple? Why only Lakme? Why only Pantaloon? Why only Samsung? Or why only for example Tanishq? First and the last answer is customer satisfaction. Only one answer, that is customer satisfaction. You go to Tanishq, they greet you properly. आप किसी नॉर्मल लुक्कड़ की दुकान पे चले जाओ, आपको वैसे ग्रीट नहीं करेंगे. येस और नो? फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू एप्पल स्टोर की वाइब भी अलग है यार. एप्पल स्टोर के जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो भी एक अलग लेवल के होते हैं, एकदम प्रोफेशनल्स होते हैं. वो ऐसे नहीं कि हम लुक्कड़ पे गए, हाँ जी भैया जी क्या दिखाना है. दे विल नॉट टॉक टू यू लाइक दैट. इट इज़ बिकॉज ऑफ क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. येस और नो? इसी वजह से एक ब्रांड चलता है. क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड a story behind them. So why would somebody come to you? First is because of customer satisfaction, that is feedbacks. आपके feedbacks कितने strong है? आपने मेरे feedbacks देखे हैं कभी? That how people scale from 0 to like 2.4 lakh rupees within 28 days. आपने कभी देखे हैं हमारे feedbacks देखे हैं आपने? Within 6 months one of my mentee has scaled to 10 lakh rupees. Have you seen all those feedbacks? These feedback, इन्हीं feedback की वजह से शायद आपके मन में trust आता है मेरे लिए. Yes or no? इन feedbacks की वजह से you feel that trust that yes, maybe Pooja Gulati ma'am can help me out. This is why people will also come up to you. Your feedbacks are your diamonds. Remember this. Your feedbacks are your golden nuggets. लिख लो कहीं पे इसको. Your feedbacks are your golden nuggets. And how you will get those feedbacks initially तो आपके पास कोई expertise भी नहीं है, आपको पढ़ाने का कोई experience नहीं है. आपको initially feedbacks कैसे मिलेंगे? कौन बताएगा? Initially how will you get those feedbacks? Initially you will get those feedbacks by teaching people for free. आपने एक ग्रुप को फ्री पढ़ाया, उनको हेल्प करी, उनको नर्चर किया, and you get that feedback, and from the feedback you start earning money. Understood everyone? Understood? Right? So this is why. So now comes a very important aspect, that visibility creates branding. How many of you have heard this name of personal branding these days? बहुत सारे लोग आजकल पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं. How many of you have heard the name of personal branding?
टाइप आई इन द चैट बॉक्स प्लीज. You should build your personal brand. Personal brand होना बहुत ज़रूरी है. How many of you have heard this? Right. So I would like to tell you there is nothing like personal brand. Personal brand उसको कहते हैं जो अमिताभ बच्चन का है, जो शाहरुख खान का है, कि आप रोड से निकल रहे हो पूरी दुनिया आपको जानती है. क्या एक सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया आपको जान सकती है? आपको सिर्फ वही लोग जानेंगे जो आपको रेगुलरली देख रहे होंगे. Yes or no? So one thing that social media helps you with, that is visibility. आपको विजिबिलिटी देने में हेल्प करता है. यार हाँ, पूजा नामक भी एक बंदी है इस दुनिया में, या सुखमनप्रीत नाम की भी एक लड़की है इस दुनिया में जो ऐसा ऐसा शायद कुछ सिखाती है. राइट. सो विजिबिलिटी देता है आपको, और विजिबिलिटी से आपका ब्रांड बनता है. नेक्स्ट इज योर सोशल मीडिया, योर सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऐसा कोच भी नहीं बनना है कभी जिसके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए. यू हैव टू बिकम अ काइंड ऑफ कोच हु हैज़ द इंटायर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, who has entire subject matter knowledge about his industry, in and out. आपको सब कुछ पता है. very 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 important, so that कभी भी आप कहीं लैक ना कर जाओ. next thing is use the simple formula, that is MTNUT. what does MTNUT says? money, time, network, urgency and trust. money, time, network, urgency and trust. money, time, network, urgency and trust, wherein money is the least important and trust is the most important. एप्पल ने ट्रस्ट बनाया तभी उसका 2 लाख का फोन एक दिन में सोल्ड आउट हो जाता है और प्री बुकिंग भी होती है. यस और नो? सिमिलरली द सेम गोज टू यू एज वेल. जब आप मार्केट में इतना ट्रस्ट बना ले जाओगे, एक बार आपने वो टारगेट हिट कर लिया तो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट हिट करना बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज आपने मार्केट में क्रेडिबिलिटी बना ली होती है. अंडरस्टूड एवरीवन? टाइप ए इन द चैट बॉक्स इफ दिस इज क्लियर. Type A in the chat box if this is clear to all of you. No. Cool. Next is, I am giving you a roadmap that how you can earn 1 lakh rupees within 1 month. MTNUT का मतलब होता है मनी, टाइम, नेटवर्क, अर्जेंसी एंड ट्रस्ट. अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं एक महीने में, तो आपको 3,333 रुपये एक दिन का कमाना है. 3,333 रुपीज़. इज इट डिफिकल्ट टू अर्न? इज इट डिफिकल्ट एवरीवन? अगर आपके पास अपना एक डेडिकेटेड कोर्स है, आपके पास एक मेंबरशिप है लोगों को देने के लिए, आपके पास एक प्रोडक्ट है लोगों को देने के लिए, और आपके पास वो लोग हैं जो उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, तो क्या 3,333 रुपये एक दिन का कमाना मुश्किल है? क्या कभी आपको ये नॉलेज कभी किसी ने दी? लोग आपको इतना बड़ा गोल दे देते हैं, अरे 1 लाख रुपए कमाना है एक दिन का, लेकिन कोई आपको इतना ब्रेकआउट करके नहीं दिखाता, इसलिए वो गोल बहुत बड़ा बनता है. दैट इज वाई इट इज सेड दैट यू हैव टू डिवाइड योर गोल्स इनटू स्टेप बाय स्टेप एंड स्मॉलर गोल्स. समझ आया आप लोगों को? हाउ मेनी ऑफ यू आर शॉक्ड एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट अर्निंग 1 लाख रुपीज इज ईजी नाउ? टाइप ई इन द चैट बॉक्स. Type E in the chat box. Easy now, right? E, right? So you only have to earn 3,333 rupees every single day. ये अमाउंट फ्लक्चुएट भी हो सकता है, मैं तुम्हें एक नॉर्मल आइडिया दे रही हूँ. किस दिन कुछ भी नहीं होगा, अगले दिन शायद 4 सेल्स हो जाए. So I'm just giving an idea. Alright? So 1 lakh is equal to 3,333 rupees per day. How many of you knew about this? How many of you knew about this fact? Type I knew that. But क्या आपने इसको कभी अप्लाई किया था? Have you ever applied this? Always remember people, knowledge without implementation is zero. Knowledge without implementation is zero. If you are taking knowledge, if you are not implementing, absolutely worthless knowledge है वो दुनिया की. समझ आ रहा है? सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? बोनस टिप क्या है आपका? टेक एडवांटेज ऑफ डेज. वेन एवर यू आर अ कोच और वेन एवर यू हैव समथिंग टू गिव टू पीपल, फॉर एग्जाम्पल यू टीचिंग समथिंग एंड यू हैव पीपल, यू डोंट हैव टू सेल एनीथिंग एट द एंड ऑफ द मंथ. मतलब एंडिंग वीक, आप एंडिंग के 2 दिन में या फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में बेचो उस चीज़ को. यू डोंट हैव टू सेल इट एट द एंड ऑफ द मंथ, नियर अबाउट बाय 20th के बाद, 20th से लेकर 28 तक नहीं बेचना है आपको. वाई? बिकॉज तब तक लोगों के पैसे खाली हो चुके होते हैं. येस और नो?
यस और नो? सैलरी लोग होती है, सैलरी होते हैं लोगों के पास, राइट? इवन यू, सम ऑफ यू मस्ट बी ऑन सैलरी बेसिस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ डेज. आप महीने के फर्स्ट वीक में सेल्स वेबिनार करो. You will able to crack many sales then. Understood everyone? Type A in the chat box. Type A in the chat box if you all agree. Type A in the chat box everyone. Next is your free content needs to be the best content. How many of you are active on social media? How many of you are active on social media? Okay. Now my question is, how many of you create content? Okay. अंकुश, आप किस चीज़ के बारे में रील डालते हो? I just make reels. Okay. किस चीज़ के बारे में? अफिलिएट मार्केटिंग. Okay. सो योर फ्री कॉन्टेंट नीड्स टू बी द बेस्टेस्ट कॉन्टेंट एवर. अब आप ये वाली चीज़ बोलोगे कि यार मैम अगर हम सारा कॉन्टेंट अपना फ्री दे देंगे तो लोग हमसे हमारी जब मेंटोरशिप लेंगे या हमारा कोर्स करेंगे, हम क्या सिखाएंगे? जब वो आपकी मेंटोरशिप या जब वो इंसान आपका कोर्स लेगा तो वो आपकी गाइडेंस लेगा इंडिविजुअली. तब तक आप उसको जो गाइडेंस दे रहे हो वो सिर्फ सार्वजनिक नॉलेज है. लेकिन जब कोई आपसे कनेक्ट करता है आप उसके लिए उसकी पर्सनलाइज नॉलेज देते हो. येस और नो? अ नॉलेज दैट इज जस्ट मेड फॉर दैट पर्सन. येस और नो? सो वो इंसान वो चीज़ खरीदेगा. अंडरस्टूड एवरीवन? टाइप ए इन द चैट बॉक्स इफ दिस इज क्लियर. टाइप ए इन द चैट बॉक्स इफ दिस इज क्लियर. Good. Next is your success doesn't come to you, you go to it. How many of you think success will come to you? How many of you think that success will come to you? कि मेरी सक्सेस तो, मैं तो अभी बैठा रहूँगा ऐसे, मेरी सक्सेस तो अपने आप आएगी मेरे पास. ऐसे बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेज है इस दुनिया में जो यही बोलते हैं कि यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट एंड इट विल कम टू यू. नेवर हैपन्स. यू हैव टू गो एंड अचीव वॉट एवर यू वांट टू डू, कीपिंग अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट इट. Right? Success will never come to you. You have to go to success. You have to work like donkey to achieve it. कुत्तों की तरह मेहनत करके आपको अचीव करना पड़ेगा. बट हाँ, अगर स्ट्रैटेजी अच्छी हो तो आप उसको जल्दी अचीव कर सकते हो. समझ आ रहा है आप लोगों को? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स इफ दिस इज क्लियर. टाइप वाई इन द चैट बॉक्स इफ दिस इज क्लियर एवरीवन. Just wait 1 second people. My laptop charge just got discharged. Okay. मैं भी करती हूँ. Just give me a minute. मम्मी, चार्जर ला दो यार लैपटॉप का. लैपटॉप का मैकबुक. मैकबुक बोला. देखो उधर बेड पे तो नहीं पड़ा. So next thing is that is more reaching out means more success response probabilities. If you, अब होता क्या है, आप लोग कंटेंट बनाते हो, आप लोग 4 लोगों को रीच आउट करते हो, 5 लोगों को रीच आउट करते हो, 6 को करते हो, 7 को करते हो, वो मना कर देते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक देन कि इस चीज़ में कोई स्कोप ही नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक देन कि इस चीज़ में कोई स्कोप ही नहीं है? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स इफ यू थिंक लाइक दैट. आप 5 लोगों को रीच आउट किया, आपके अंदर डीमोटिवेशन आ जाता है. यू फील डीमोटिवेटेड. अरे यार कोई खरीदना ही नहीं चाहता. अरे यार nobody wants to buy from me. Has any time this thing has happened with you? That such type of things create demotivation. Type I in the chat. I feel that, right? Yeah, happens with a lot of people. Even मेरे साथ भी ऐसा होता था. But it is very important to understand people. आप जब reach out ही 6 लोगों को कर रहे हो तो आप कैसे successful opportunities के बारे में सोच सकते हो? You have to reach out to more and more people to create more and more success opportunities for yourself. आप कम लोगों को रीच आउट करके ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सोचते हो. यू आर एक्सपेक्टिंग मोर बाय डूइंग लेस, isn't it? You are expecting more by actually doing very less. How many of you agree? Type Y in the chat box. Type Y in the chat box if you agree that you are expecting more by doing very, very, very less. Right? So yes, this is very, very true that you expect more by, right? So you have to do more and expect less. Focus होना चाहिए. Once you expect less, hurt कम होते हैं और आपके अंदर motivation ज़्यादा रहता है. So you have to do more and expect less. Okay. Next is
A 30 days model that I have for you to grow yourself organically. What is that? 30 days model में आप क्या करेंगे? You will post 30 days of constant content on your social media about one topic that you want to coach people for, that you want your visibility for. It can be anything. It can be sales, marketing, graphic designing, anything कि आप अपने graphic designing की importance बता रहे हो, any of the other things, right? So what will you do is right hand side का जो grid है आपका Instagram का, अब उसमें रोज़ एक रील डालेंगे, बीच में रोज़ एक अब तो IGTV हट गया है शायद ना, क्योंकि रील ही हो गया. सो एक राइट हैंड साइड पे रील डालेंगे, सेंटर में एक पोस्टर डालेंगे रिलेटेड टू योर निश, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक रील डालेंगे. 30 दिन तक लगातार, 3 कंटेंट एवरी सिंगल डे फॉर कंटिन्यूस 30 days. What are the benefits of doing that? First, it will make you a subject matter expert, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा कंटेंट बनाना है आपको ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी. Yes. Second, when you will create more videos, it will help you in improving your communication skills. It will make you more camera confident so that you can talk to more people. Third, it will build your brand. It will start giving you some visibility. It will start reaching out. It will help you to reach out to those people who actually wants to learn about graphic designing, or for example about life skill, for example about meditation, for example about anything which you are giving information for. So this 30 days model can be a revolutionary thing for you. Type I in the chat box if you are going to do this. Type I in the chat box. You can optimize your current social media only. आप current social media handle को optimize कर लो, उसमें थोड़े changes कर दो अपनी bio में. That is it. That is something that you would do, and that is good to go. Easy, right? Understood, everyone? Good. Next is freemium model is the best, that you give in the beginning of your journey. You give something for free to people and then take their feedback and use it to earn money. राइट, अंडरस्टूड एवरीवन? बिकॉज वैल्यू जब तक आप नहीं दोगे किसी को नहीं दिखेगा आप एक्चुअली किसी की लाइफ में वैल्यू दे रहे हो, नो बडी विल कम टू यू, नो बडी. अंडरस्टूड एवरीवन? टाइप आई इफ दिस इज क्लियर. हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस वेबिनार? Are you enjoying this webinar? Type Y in the chat box if you are enjoying this webinar. Type Y in the chat box if you are enjoying this webinar. Thank you everyone. Thank you so much. फ्रीमियम मॉडल मतलब है कि आप स्टार्टिंग में लोगों के साथ फ्री में काम करो, कुछ आपने लोगों को ले लिया कि मैंने आपको ये सिखाया, देन टेक फीडबैक फ्रॉम देम that how that really helped them in their life, and upload it, create your portfolio, and then start using it to pitch for a paid program, right? That is how you can earn money, because लोगों को तभी लगेगा ना कि आप you are doing something. Thank you so much. Thank you so much everyone. Okay, so next thing is take full advantages of free resources, that is Canva. You can use for graphic designing. You can use Instamojo and Razorpay, PayPal to create your landing pages, and you can take payments from there. Google Calendar को आप use कर सकते हैं पूरा दिन अपना schedule करने के लिए. Lightroom is a very good app which you can use for editing your pictures. Telegram is a very good app to manage your people. InShot is very good to edit your videos. Very easy things, and you can use it. Exactly how you help people sell solution and not features. Always remember, you have to sell solution and not features, right? This is something that I can help you with. This is something that I would be happy to help you for. So sell solutions and not features of a product. Very important. Okay, next is 2 social media you need to focus more upon. First is YouTube, and second is choose from Facebook or Instagram. So अगर आप इनमें से I would recommend first is YouTube and second one is your Instagram. Instagram can be connected with your Facebook, और वहाँ से आपका content वहाँ पे चला जाता है. So that's not a problem. Sure. So first has to be a YouTube thing and second has to be your Facebook or Instagram. अब one thing that I want to teach all of you is content distribution. Content distribution का मतलब क्या होता है? आपने फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो बनाई दैट 5 ways to improve your communication skills.
Let's take an example that आपने एक वीडियो बनाई 5 ways to improve your communication skills. Now this one big video can go on your YouTube. Type A in the chat box. अगर ये बड़ी वाली वीडियो आप YouTube पर डाल सकते हो, type A in the chat box. A. सेकेंड इज ये बड़ी वाली वीडियो आप अपने लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो, अपने फेसबुक पे भी डाल सकते हो, अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो. येस और नो? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स. टाइप वाई इन द चैट बॉक्स अगर आप बड़ी वाली वीडियो वहाँ डाल सकते हो. राइट, गुड. नाउ आपने 5 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड किया कि दैट 5 ways यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अब आप इन 5 में से 5 छोटी छोटी वीडियोज बना सकते हो. यू कैन मेक शॉर्ट 5 वीडियोज. येस और नो? Type A in the chat box if you can do that. Type A in the chat box if you can do that. उन छोटी छोटी वीडियोस को आप फर्स्ट रील डाल सकते हो. सेकेंड इज यू कैन डू दैट एज अ यूट्यूब शॉर्ट. एंड थर्ड इज यू कैन डू इट एज अ फेसबुक शॉर्ट. ठीक है ना? मतलब एक बड़ा कंटेंट आपने बनाया, उस बड़े कंटेंट से आपका एक हफ्ते का काम चल सकता है. समझ आया आप लोगों को? टाइप आई इन द चैट बॉक्स इफ दिस इज समथिंग दैट was really helpful to you. Type I in the chat box. Yeah, have to focus on creating one content and that needs to be world class. मतलब amazing content होना चाहिए, and that will help you out in doing a lot of amazing things. Okay, understood everyone? Type P in the chat box if you all are clear. Next is nurture your audience and construct proper CTA. What is CTA everybody? CTA का मतलब होता है call to action. आपने बहुत सारे लोगों की Instagram bio पे लिखा होगा ना, click here to get my free ebook, click here to enroll for my webinar. देखा है आपने कभी? उनकी bio में एक लिंक होता है, उसके ऊपर वो लिख के रखते हैं. देखा है कभी? Yes or no? What is that? That is CTA. आपको अपनी ऑडियंस को प्रॉपरली नर्चर करना है, अपनी ऑडियंस को प्रॉपरली गाइड करना है कि आप कैसे कैसे उनके लाइफ में चेंज ला सकते हो. एंड अपने इंस्टाग्राम को आपको ऐसे यूज़ करना है दैट इज़ अर्निंग मनी फॉर यू. अगर आप कुछ फ्री में दे रहे हो किसी को, आप फ्री में वेबिनार दे रहे हो, आप फ्री में ई बुक दे रहे हो, आप फ्री में कोई कोर्स दे रहे हो, आप वो ऐड कर दो. वहाँ से क्या होगा, आपको लीड मिल जाएगी. वॉट इज़ अ लीड? लीड इज़ समथिंग दैट इज समबडी इज़ willingly giving their email ID and phone number to you. और अगर कोई आपको willingly अपना email ID phone number दे रहा है in exchange of your free product, it means they are interested in your product. It means they are interested in the knowledge that you are giving. Type Y. Type Y if you agree. Type Y if you agree on this. What about this? Yes. So जब आपके पास प्रॉपर CTA, when you will optimize your Instagram, when you will optimize your social media, you will see that you're able to create a lot of good aspects for you, a lot of good opportunities. So you have to nurture your audience very nicely. Next is be original and don't try to fake. How many of you have met me personally anytime? कौन कौन मेरे से personally मिला है आज तक? Okay, एहसान मिला है मुझसे. Okay, so जो मुझसे मिला है, was I a different person when I met you there? या मतलब, or I was same when I met you, like the one I am talking right now, or the person you see on Instagram stories in terms of how I talk, how I deliver sessions, and how I, talk to people. Was I same or was I different when you met me when you met me personally? Alright, दिख रहे होंगे. So you have to be same every time, people. You don't have to fake it anytime. Same, okay? You don't have to fake anytime. I'm exactly the same person. You meet me on social media, I'm exactly the same person. You talk with me on call, I'm exactly the same person. You talk to me on webinar, I'm exactly the same person. You talk to me personally, physically, like I'm meeting you somewhere, I will be exactly the same person you will see anytime. You don't have to fake anybody. You have to be original. Originality is very very important. आप फेक 1 साल कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मार्केट में बहुत टाइम तक रहना है, you don't have to fake, you have to be original.
वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपका एक फ्रीमियम मॉडल हो जाता है, जब आप किसी को फ्री में कुछ देते हो, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने किसी को 7 दिन की फ्री ट्रेनिंग दी, ठीक है, आपने उनको बोला कि दैट आई एम गिविंग अ फ्री ट्रेनिंग फॉर 7 days, आप आ जाओ। उसके बाद 7 दिन के बाद आप उनको बोलो कि अच्छा आपने इतना सब कुछ सीखा है, नाउ आई विल गिव यू माई मेंटोरशिप। आप उसको एक छोटी मेंटोरशिप पिच कर दो, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़, 600 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, उसको छोटा सा एक प्रोडक्ट पिच कर दो। वेन यू सेल अ स्मॉल प्रोडक्ट आप बहुत सारे लोगों को बेच रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत सारे लोगों को अपने इकोसिस्टम में भी लेके आ रहे हो, आप अपने ग्रुप में लेके आ रहे हो। अंडरस्टूड एवरीवन? टाइप P इन द चैट बॉक्स इफ दिस इज क्लियर। यू हैव टू पिच अ स्मॉल प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कोचेस, वो एक बारी में बहुत महंगा कोर्स दे देते हैं। नहीं, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। समझ आया आप लोगों को? टाइप A इन द चैट बॉक्स इफ दिस इज क्लियर। A फॉर एप्पल। Type A in the chat box, folks, if this is clear. Thank you everyone. Thank you. Next is, for example, I'm just giving you a small example, people. For example, you are a stock market coach. आपका लेवल 0 प्रोडक्ट क्या है? आपने एक फ्री मास्टर क्लास करी, उसके बाद आपने फ्री मास्टर क्लास में बोला कि आई एम गिविंग यू अ 7 days स्टॉक मार्केट बिगिनर्स कोर्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर 699 रुपीज़। आपने वो ले लिया, मतलब किसी ने वो ले लिया। लेवल 2 में आपने दिया कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको कोर्सेज भी दूंगा और मैं उसको आपको लाइव सेशंस भी लूँगा, एंड द अमाउंट इज़ फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़ फॉर 3 months। आपने देखा उसको 699 रुपीज़ में कितना अमेजिंग वैल्यू दिया है, तो आप डेफिनेटली उसको पे करोगे, यस और नो? अगर आपने छोटे प्रोडक्ट में किसी को वैल्यू दी है तो डेफिनेटली आप उसका बड़ा प्रोडक्ट खरीदोगे ना। टाइप P इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री। अगर उस छोटे प्रोडक्ट ने आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस लेके आया है, सो डेफिनेटली यू विल बाय द बिगर प्रोडक्ट। टाइप P इन द चैट बॉक्स। P फॉर पैरेट लिखो। समझ नहीं आया? ओके, समझ आया। टाइप P इन द चैट बॉक्स पीपल। ओके, नाउ योर लेवल 3 प्रोडक्ट कैन बी कि आप एक 1-on-1 कंसल्टेंसी बेच दो। 1-on-1 कंसल्टेंसी क्या होता है कि आपने बोला कि यार अब तो आपने इतना सब कुछ सीख लिया, वो और स्टक हो गया है कहीं पे, उसको और ग्रो करना है। आप बोलते हो ठीक है, आई विल हेल्प यू पर्सनली, मेरा 2 घंटे का 1-on-1 कंसल्टेंसी है इस दिन को, द चार्जेस आर 30,000 रुपीज़। आपने उसकी कोर्स की वजह से आपने फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए कमाए हैं, तो क्या आप उसको 20,000 रुपये नहीं दोगे? 30,000 रुपये नहीं दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? ए टाइप A in the chat box if you will give that money, if that person really brought a change in your life, right? दोगे ना? So this is how you can have your entire coaching business set up. And सबसे amazing चीज़ मैं आपको बताती हूँ why having a coaching and a consulting business is very profitable. Because for example मेरा टी शर्ट का बिजनेस है, मैंने ये टी शर्ट बनाई 300 रुपये की, मैं इसको बेची हूँ 350 रुपये का। इस 350 रुपये में मेरे को 50 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपये मेरे को बच रहा है। इस 50 रुपये में मैं 10 रुपये फॉर एग्जांपल शिपिंग का भी देती हूँ। 10 रुपये मैंने जो उसको कार्डबोर्ड में लगाया, उसको पैकिंग किया, 10 रुपये उसका ट्रांसपोर्टेशन का, सब कुछ लगा के मुझे 15 रुपये बचता है। समझ आया? आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। मुझे क्या बचता है? 15 रुपये बचता है। तो मैंने एनर्जी तो लगाई ना, मैंने 350 रुपये का प्रोडक्ट बेचा, लेकिन मुझे बचा कितना? 15 रुपये। जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। व्हेन यू आर इनटू कोचिंग इंडस्ट्री, अगर आपका प्रोडक्ट 700 रुपये का है और अगर आपने अभी आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो, आप इनऑर्गेनिक नहीं गए हो कि आपने फेसबुक एड्स नहीं चलाई है, यूट्यूब एड्स नहीं चलाई है, तो इज दिस 700 रुपीज़ कम्प्लीटली प्रॉफिट? येस और नो? टाइप यस। कैसा बिजनेस है जो 100% प्रॉफिट पे खेलता है? बताओ। यू आर इनटू 100% प्रॉफिट if you are having your entire coaching and consulting business set up. Isn't this amazing? Type A in the chat box if you are happy to know this. Type A in the chat box if you are happy to know this. Okay. Amazing, right? So हमें समझदार एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें बेवकूफ़ एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है। Understood everyone? Type A in the chat box, folks. Only then I will proceed further. Okay.
Thank you, thank you. Next is, don't straight away aim for website for your machine making sources also. Okay, for your money making source, basically यहाँ पे money making आएगा. So basically you have to बहुत सारे coaches क्या करते हैं, अरे हमें coach बनना है, we will straight away have your website. No, you straight away need to have your landing page. Landing page is important. This is very technical thing, but अभी we will try to grow organically, but it is very important कि आप लोग you focus on your Instagram and your social media only. Now my important question to all of you is, but do you wish to be stuck only at 1 lakh rupees? Type Y in the chat box if you want to stuck only at 1 lakh rupees, and type N in the chat box if you want to grow more. Type grow more. What about others? What about others, people? Don't you want to grow? People? Okay. What about others? Sachin, I want to grow. Okay. What about others, folks? Abhishek, Ankush, Kunal, Priya, Sachin. Sumit Wadhwa, Yash Agarwal. What about others, people? It's not difficult, people. मैंने आपको पूरा road map दे दिया है. 1 lakh is not hard. 1 lakh is not at all hard, people. It is very doable. Very, very doable, provided you have that ecosystem. Right? So, yes, absolutely. So, even I don't want all of you to be stuck at 1 lakh rupees, people. I really want you to grow in your life. Like the way I grew and my team grew themselves. So, hereby, Team Pooja Palati presents Coaching and Consulting Business Scalability Booster Program. This is our exclusive community program that we have created. And how many of you know that there was a bonus that we told you about our community program that we are going to give you? Type A in the chat box if you knew about this. Type A in the chat box that you knew about this. That there is something we will be giving a bonus to you that you can become a part of our community program. Type A in the chat box if you knew about the same. Okay, awesome. So now I want to teach you that who can actually become a part of our community program. Coaches, teachers, students, housewives, even entrepreneurs, even employees. In short, if you have a skill and you wish to monetize, this is one-stop destination for you. We believe in building your strong foundation. After this session, how many of you thought that yes, your foundation needs to be more strong in order to construct a business? Type A in the chat box. किस-किसको ऐसा लगा यार मेरी फाउंडेशन में अभी भी थोड़ी बहुत और मेहनत करना बाकी है in order to grow myself? Right? I'm happy that you found that. Okay. Yeah, there are a lot of things that you need to grow upon, right? So, how I can help you and how our team can help you. We help you to achieve a journey from employee and from nowhere to an entrepreneur in just 6 months. That is, it is sure shot. If you become a part of our community, you will, मेरे से लिख के ले लो, अगर आप वही चीज़ फॉलो करोगे जो मैं आपको बोलूँगी, you will be able to hit the target of 5 lakh rupees within 6 months. If you follow the strategies that I tell inside my community, you will be able to hit the target of 5 lakh rupees within 6 months. How many of you are excited about it? Type E in the chat box if this is something that is going to blow your mind. If this is something that is really helping you to get that hope again in your life. Excited? You should be. Right. So, today we are here to offer you our startup membership program. So, we have 3 membership programs. First is startup, second is grow up, and third is scale up. As you all are beginners, so we are giving you the startup membership offer. So which is all about what you will get. So basically this community program is a combination of 2 things, recorded courses as well as live sessions, right? You will get a lot of recorded courses and a lot of live sessions, right? So first course that you are going to get is you will get detailed
nail your niche course, you will get more and more clarity towards how you can nail your niche, and you will get the exact blueprint you need to follow so that you can achieve freedom in your life. Next is you will get a detailed master your curriculum course. Most of the coaches fail in the market because they know अच्छा ठीक है मुझे ये सिखाना है, बट मुझे क्या सिखाना है, उनको पता है मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखानी है, लेकिन मुझे अपने कोर्स में सिखाना क्या है, करिकुलम में डिजाइन नहीं होता है, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू बिकम अ कोच, you need to decide your curriculum, right? So we help you, you will get a detailed course on master your curriculum. Next is you will get a detailed course on gain trust in the market. Very 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 important, that how do you establish yourself, and if somebody is even watching your ad, or if somebody is watching your social media, your videos, this get the authority कि हाँ भाई इस बंदे में कोई बात है. So we help you to improve your personality, we help you to gain that trust in the market, we help you to build your freedom model business roadmap. A detailed course you will get, that how you will be able to get that freedom model business model. Next is you will get the entire roadmap, that how you can scale to 5 lakh rupees within 6 months from scratch. वेरी 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 स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट करके 5 लाख रुपए तक आप कैसे कमा सकते हो 6 महीने में. आई विल हेल्प यू टू हेल्प गेट यू दैट. Communication skills and public speaking mastery program, which is my forte. Communication skill is something that I love, and if you want to become a coach, you need to teach your students communication, and you yourself need to have great communication skills. So we are going to give you that as well. Content strategy, very detailed strategy we are going to tell you, that how you can plan your content and how to decide your content, how to record your content. In short, you will become your own social media manager when you will watch this entire course. Next is roadmap for your subject matter expertise. It is very important. हमें सब लोग बोलते हैं कि यार सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बनना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज अचीव कैसे करना होता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना कैसे होता है अपनी फील्ड का. सो यू विल गेट द कंप्लीट क्लैरिटी ऑन दैट एज वेल. नेक्स्ट इज सिस्टम क्रिएशन. All of you remember one thing, systems work and people fail. एक एम्प्लॉय तो आता जाता रहता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, उसका सिस्टम, कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई है इसको हम ऐसे एड्रेस करेंगे, ये चीज़ आई है उसको हम ऐसे एड्रेस करेंगे. सो आई हेल्प यू टू हैव अ प्रॉपर सिस्टम फॉर योर सेल्फ, so that you can only focus upon your revenue strategy as well as towards your coaching strategy. A hall of fame mastery. So one thing, people, you all have an award, and a felicitation will happen when within 6 months or 7 months, 6 to 7 months, you will be able to achieve your target of 5 lakh rupees. You get an opportunity, and I will interview you personally. And that particular interview of yours will go on our YouTube channel. All right, this is a kind of visibility you're going to get, people. And so this is a kind of a program that we have, that is recorded plus weekly live sessions. So our live sessions happen every Sunday from 11 to 2 p.m. 11 to 1:30 to 2 p.m. and tomorrow is our again weekly connect with all of our learners, right? How many of you are finding it amazing, the knowledge that I've shared with all of you? How many of you liked the entire concept of our membership? Type A in the chat box if you really liked it. Type A in the chat box if you really liked it. Type B in the chat box if you are really interested in being a part of our membership, people. Type B in the chat box if you are really interested in being a part of our membership plan. Alright. So I can see Karan, Sachin, Sukhman. What about others? Yash. What about you? What about others, people? Sumit, Yash, Sachin, Priya, Kunal. Right? So I need to see that excitement, people, because this is something that can change your life 360 degrees. Vouch me for that. Next is you will get 6 months of hand molding. Like 6 months तक आपको continuous live sessions मिलते हैं, plus lifetime access of content. जो आपको content मिलेगा, ऐसा नहीं 6 months बाद हम आपसे ले लेंगे, चाहे आज से 4 साल 5 साल 10 साल बाद भी आपके पास उस content का access रहेगा ही रहेगा. बोनस आपको क्या मिल रहा है? यू विल गेट फेसबुक कम्युनिटी सपोर्ट इंस्टेंट, यू विल गेट डेली टास्क प्लस लाइव Q&A एवरी संडे. आपने फॉर एग्जांपल कोई लर्निंग करी है, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, you will get a chance to ask your queries live from me every Sunday. All right. Next is
my question to all of you is, what do you think your investment would be for entire community program of ours? Give a guess, everyone. What do you think your investment would be for being a part of our community program? What do you think, people? Give a guess. I'm coming on that point, Karan. How much do you think your investment would be, people? Just give a guess about it. Just give a guess about it. Any guesses? Like anyone wants to get? Just give a guess. 499. Okay. Awesome. You think Pooja Gulati will give you so much of knowledge for 499? I'm telling you. I'm telling you everything, that how you can go to 5 lakh rupees, and this is something that you feel. That's amazing. Good. So my thing is, my experience of failed startup for plus 6 years of my journey, that is something that is invaluable, people. That is something that is really going to help you, that what mistakes that you don't have to do in your journey. So this is something that you will get. इसके ऊपर भी आपको detailed course मिलेगा. Next is weekly live session every Sunday, which is priceless. Community support, again priceless, because your network is your net worth. Next is 15 hours of recorded content. You will get 15 hours of recorded content from my side. And even कभी आपका Sunday का session miss हो जाता है, you will get recording of each and every session. Not to worry about that. Next is live Q&A plus hand holding, which is again priceless. So give a guess, people. Again, somebody who said 20,000. Somebody said 10 to 20,000. What about others, like Manvi, Ehsan, Karan, Kunal, Priya, Sachin, Shivam, Sukhman, Sumit, Yash? What do you think? What is going to be the price point at which you can get this entire community program? The startup plan. I really like the word startup. Startup plan. You're just starting up your journey. So that is why we have named it startup. So yeah. Write startup in your chat box if you're really excited. Type startup in the chat box if you are really excited to accelerate your journey. Type startup in the chat box if you are really excited to be a part of it and to really grow yourself. Okay, Sachin Pal has written startup. Sukhman Preet has written startup. Okay, cool. Awesome, everyone. So, as written by somebody, it is not 20k either. It is not 15k either. It is not 10k either. It is not 8k either. Now think what is it going to be, people? It is not 8k also. You're getting so much of knowledge, so much of hand holding. Even it's not 8k. What do you think it is for? Okay. What about others? 4995, 5k, 2599. Okay. Okay. So people, I am giving you an early bird offer. It's not 6k either. The early bird offer is 5,000 rupees. That is even 1 rupee less than that. That is 4,999. And our next session is happening tomorrow itself. Our next weekly session is happening tomorrow itself. You can and you should reserve your slot right now. That is, you can proceed with the payment on my phone pay and Google Pay number, that is 7290816919, or else you can use the Google Pay number, that is 9810600843. You can use either of the payment modes and you can reserve your slot straight away. Like straight away you can reserve your slot, and if you have any queries you can definitely ask me straight away. How many of you are happy with this price point? Write I in the chat box. Write I in the chat box if you are happy at this price point. Okay, cool. And which payment mode you are using, people? I want to ask you that as well. If you have any doubts, people, you can definitely ask me straight away. If you want to ask anything, you can. But no. See, do you want your success to be at a discount? One more thing, people, I can do a small favor for all of you. I can give you one installment opportunity. That is, you pay
2,500 straight away now, and you can pay 2,500 by next week. This is the last thing that I can offer you right now, and this is also going to fade away if you don't proceed with the enrollment right now. 2,500 this week and 2,500 next week. That is, अभी आप 2,500 करके अपना slot reserve करेंगे, and next week आप 2,500 Sunday की session से पहले देके अपना slot अपना complete कर लेंगे. Only then you will get the access of the course. Right? So proceed with the payment straight away, people. If you have any doubts, clarify it. Very, very, very important that you become a part of it. You become a part of it, people. Any doubts, anybody? You have any doubts? You have any queries? Any doubts, anyone? Ma'am, done. Please check. Yes, Manvi. It is received. Thank you so much. Thank you. Congratulations and welcome on board. Any other doubts, people? Any other doubts, anyone? Otherwise, please proceed with the payment, because this is something. Most welcome, dear. Most welcome. We are very happy to have you. Any other doubts, anyone? Any other queries if you have? Any other doubts you have? Or else kindly proceed with the payment for this particular community program. Any doubts, anyone? So you can proceed with the payment. That is 4,999. Some time for enrollment, please. We have our session tomorrow at 11 a.m. I would request you, if you can, please proceed with the payment before that only. Alright? Any other queries, anyone? Any other queries if you have? Awesome. So thank you so much, everyone, for being a part of our live webinar. My team shall connect with you. And how many of you want that my team should connect with you? Like, for if you want to have a one-on-one conversation with them. How many of you want to talk to my team so that you can get more clarity? Sachin, you want? Okay. Ehsan, kindly note down Sachin's number. What about others? Okay. Awesome. Thank you so much, everyone, for being a part of this live webinar. I hope you all learned something. Yes or no? You learned something, everyone? Sukman, why haven't you enrolled yourself yet? Sachin, why haven't you enrolled yourself yet, people? The people, those are watching us, what is stopping you to enroll yourself? Shivam, why haven't you enrolled yourself? Kunal, why haven't you enrolled yourself yet? Like, why? Because I want to success, and that is why you haven't enrolled. ये भी ठीक है. Okay, awesome. Thank you so much, everybody. I am really thankful for all of you to be a part of our today's webinar. Thank you so much. Have a good day ahead. Take care. Bye bye.